Okay, students, we are back with one more numerical from the past papers, Thermodynamics. The numerical states that 1200 joules of heat energy is supplied to a system at constant pressure. बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से एक साथ मालूम हो गई. फॉर एग्जांपल एक बात हमें ये मालूम हो गई कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर. और जब 1200 जूल्स ऑफ एनर्जी सिस्टम को सप्लाई की गई है तो हमें ये बात भी मालूम हो गई कि जो हीट सिस्टम को सप्लाई की जाती है वो पॉजिटिव होती है. तो हमारे डेटा के अंदर जो डेल्टा क्यू होगा वो लिखा जाएगा पॉजिटिव 1200 जूल्स. Okay, the internal energy of the system increases by 750 joules. ये जो increases by है इससे पता चलता है this is the change in internal energy, that is positive 750 joules. Once again using the convention, internal energy अगर increase होगी तो positive consider की जाएगी, decrease होगी तो negative consider की जाएगी. एंड द वॉल्यूम बाय 4.5 मीटर क्यूब. इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी 750 जूल्स के हिसाब से बढ़ रही है और वॉल्यूम 4.5 मीटर क्यूब के हिसाब से बढ़ रहा है. व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए ये? अगर आप समझ गए हैं कि दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम तो बिल्कुल सही समझे हैं. दिस इज डेल्टा वी 4.5 मीटर क्यूब. फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन. दिस इज डेल्टा डब्ल्यू. एंड फाइंड द प्रेशर ऑन द पिस्टन. वो जो कांस्टेंट प्रेशर है वो मालूम करना है, यानी आपको मालूम करना है P. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. इसको हमने सॉल्व करना है. अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस. इसके अंदर ये खासियतें हैं. तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके डेल्टा क्यू और डेल्टा यू को यूज करेंगे तो हमें डेल्टा डब्ल्यू मिल जाएगा. once we can find delta W, we can simply find pressure. We can also find the change in volume. Okay, so let's start with the solution of this numerical. First आप use करेंगे first law of thermodynamics using first law of thermodynamics state करता है delta Q should be equal to the sum of delta U and delta W. We need delta W, that is delta Q minus delta U. Delta W will be equal to 1200 minus 400 and no sorry minus 750, and delta W will be equal to 450 joules. This is the work done by the process. Now we can find the pressure if we use solving for pressure. The formula for pressure is delta W equals to P multiplied by delta V, and pressure equals to delta W divided by delta V. Pressure equals to 450 divided by 4.5, that is equal to 100 Newton per meter square. This is how this numerical is going to be solved. Thank you so much. I'll see you in the next video.